वास्तविक काइनेटिक एनर्जी हम पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे इट्स एक्चुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड देन इनटू पोटेंशियल। पहले तो कोऑर्डिनेट के पास स्पीड आई ना। ज़रा बेटा हार्डर टू स्ट्रेच का मतलब ये हुआ कि आपको लेंथ में कम चेंज नजर आएगा और आप फोर्स ज्यादा बढ़ा रहे होंगे। तो अगर लेंथ में कम चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ग्राफ लेंथ से अवे जाएगा और फोर्स की तरफ बेंड। तुम आपको समझ में आई ये वाली बात? नहीं बेटा आसान, ग्रेडियंट डज नॉट वेरी फ्रॉम लोड टू लोड। वो सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद ग्रेडियंट चेंज होता है, अदरवाइज थोड़ी। इट्स बेटर टू राइट के ई, क्योंकि मसला ये है कि आपके पास 2 मार्क का सवाल है ना। Question 3. It says in an experiment, a student takes measurements and determines the extension of a spring for different loads. Apparatus is shown. अलग अलग लोड्स पे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग्स दी हुई है और इसके नीचे एक्सटेंशन का एक कॉलम बना है। Only some of the extensions are shown in the table. Complete the table to show all the extensions. एक्सटेंशन निकालने के लिए आप फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ माइनस करते हैं। तो यहां पे एक्सटेंशन चाहिए तो 350 माइनस 200 करेंगे, 150 आएगा। और इधर 420 माइनस 200 करेंगे तो 220 आएगा। कहता है कैलकुलेट द लोड दैट प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन ऑफ 49 मिलीमीटर्स। वो कितनी फोर्स है जिससे 49 मिलीमीटर की एक्सटेंशन है। देखो मैं एक बात देखता हूं कि 1 न्यूटन की फोर्स से 35 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आती है और मुझे मालूम है कि फोर्स एक्सटेंशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो बेटा अगर 1 न्यूटन से 35 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आती है तो कितनी न्यूटन में से 49 mm की एक्सटेंशन आएगी? कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 49, एक्स मल्टीप्लाई बाय 35। यहां से एक्स हो जाएगा 49/35, 1.4 न्यूटन। ये आ गई मेरी एक्सटेंशन। उरूब आप अपने वेबसाइट से निकालोगे बेटा, मसला नहीं है, वरना मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड भी करवा दूंगा। In part C, the student pulls the load downwards from the position A to position B and holds it fixed at position B as shown in figure 2.3. The load is stationary at A and at B. The load has no kinetic energy at either point. Place ticks in the boxes to show how the value of each of the forms of energy compares at A and B. Energy stored in the spring, ये B में ज्यादा होगी क्योंकि B में स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड ये ए में ज्यादा होती है क्योंकि ए में उसकी हाइट ज्यादा है, वो ऊपर है। अगर फर्ज करो ये ग्राउंड होता तो ए इज एट अ ग्रेटर हाइट। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट टू पुल द लोड डाउन। वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट इस वजह से क्योंकि द स्टूडेंट अप्लाइज अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, तो वर्क हो रहा है। कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy cannot be created and cannot be destroyed. Explain how this principle applies in this case. यहां पे ये प्रिंसिपल कैसे लग रहा है? तो देखो यहां पर 2 काम हुए बेटा। when the boy is pulling the block down, उसका वर्क और जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, ये दोनों चीजें कन्वर्ट हुई हैं
स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो हाइट कम होने की वजह से डिक्रीज कर रही है। दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इस वक्त डिक्रीज कर। तो यहां हम ये लिखेंगे कि वर्क डन बाय द स्टूडेंट and the loss in gravitational potential energy is converted into elastic potential energy of spring. ठीक है, work done by the student and the loss in potential energy is converted into the elastic potential energy of the spring. बनाएगा और आना है। Question number 4. यहाँ पे ये कहता है a student uses the apparatus shown in figure 3.1 to obtain the extension load graph of the spring. The weights of the loads are known. Student suspends the loads of increasing size from the spring and determines the extension produced. Figure 3.2 is the graph that the student obtains. वो different loads add कर रहा है और extensions निकालवाता जा रहा है। 7 न्यूटन तक ये ग्राफ को लेके गया। The spring reaches its limit of proportionality when the load is 7 newtons. Sketch the shape of the graph for load greater than 7. देखो हमेशा याद रखो, metals जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक्सटेंशन की तरफ कर्व होते हैं। These graphs curve towards extension. कौन से मटेरियल्स? मेटल्स जो कि डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, इनका ग्राफ बेंड करता है टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सिस। मैं वर्टिकल नहीं बोल रहा, मैंने ये नहीं लिखा वो ग्राफ बेंड होके वर्टिकल होता है। मैंने कहा इट बेंड्स टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सिस, ताकि एक्सटेंशन अगर वो y पे प्लॉट करे तो y की तरफ बेंड कर देना, एक्सटेंशन को अगर वो x पे प्लॉट करे तो x की तरफ बेंड कर देना। बस वो कर्व फिर x एक्सिस की तरफ होगा। The spring, all the loads are removed from the spring. A block of wood is suspended from the end of the spring, and the length of the spring increases from 4.9 to 13.4. What is the weight of the block? इसमें तो पहले एक्सटेंशन निकाल लीजिए। 13.4 में से 4.9 माइनस कर, ये हो गया 8.5 सेंटीमीटर। मैं ग्राफ पे जाऊंगा, एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे मैं ग्राफ से रीड करूंगा तो ये आएगा 3.1 न्यूटन।
ये है 8.5 सेंटीमीटर्स, और इस फोर्स के ऊपर जो एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन में जो फोर्स मिल रही है ग्राफ से, वो 3.1 न्यूटन। फिर कहते हैं द स्टूडेंट टेक्स अ सेकंड स्प्रिंग that is identical to the one in figure 3.1 and hangs it next to the first spring. Figure 3.3 shows a light rod passing through the rings at the lower end of the springs. Student repeats the experiment and gradually increases the load to 9 newtons. State and explain whether the limit is reached or not. इस बार लिमिट रीच नहीं हुई। The reason is जो 9 न्यूटन के लोड तक आप आ गए हो, दो स्प्रिंग्स पैरेलल होने की वजह से ये लोड इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो गया। 4.5 एक पे गया, 4.5 दूसरे पे गया। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 7 न्यूटन है। अभी स्प्रिंग्स पे 4.5 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब लिमिट रीच नहीं हुई। तो अब ये बोलोगे forces divided equally, hence both springs reached 4.5 newtons each. As 4.5 is less than 7 newtons, the limit of proportionality is not reached. Do you teach in alpha? Because I was searching for your name in the form but didn't find it, whereas your name was written. Walaikum Assalam, Maimuna. Maimuna, if you can't find my name, then there is a chance my batch is full, probably in alpha. Is it possible you could share your class notes as the notes which you shared in the group are harder to read? ठीक है, I'll try to do that, Mariam. Question 5. A force applied to a solid object may cause it to accelerate so that its velocity changes. State two other properties of object that may change when the force is applied. Force object के साथ और क्या कर सकती है उसे accelerate करवाने के अलावा? It can change the shape of your object, like when you stretch it, and it can even change the volume of object. When you press it, compress it, तो उसका volume कम भी होता है और stretch करने पे volume बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं then वो कहता है भाई a spring has a mass of 0.012 kilogram. The field strength is 10. What is the weight of the spring? हमने लगाया W equals mg, m मल्टीप्लाई बाय g किया तो 0.12 न्यूटन्स। ये हमारी फोर्स आ रही है।
आयशा, हम डायरेक्शन इसलिए नहीं लिखेंगे कि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है ना, वेलोसिटी में सारी चीजें आ जाती। 2 में वो कहता है द स्प्रिंग इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड अ लोड इज अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड। The spring extends by 2.7 centimeters and does not pass the limit of proportionality. Shall ठीक है. Figure 2.1 shows the spring and load attached to the lower end of the second identical spring. Suggest one reason why the extension of the second spring differs from 2.7. इस second spring की extension 2.7 से अलग क्यों है? अगर तुम सोचो तो वो second spring first spring का weight भी experience कर रहा है। लॉक का लोड तो आ ही रहा है उसके ऊपर, मगर उसके साथ साथ जो फर्स्ट स्प्रिंग है उसका वेट भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इस वजह से वो स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच हो रहा हो। तो यू कैन राइट इट ओवर देयर। Second spring extends more as it experiences the weight of load as well as the weight of lower spring. Explain what is meant by limited proportionality. अभी खैर पढ़ भी लिया था हमने। The value of force beyond which force is not directly proportional to extension. लास्ट में वो मुझे कहता है the load in figure 2.1 is pulled down before its equilibrium position. State the form of energy stored in the stretch spring. Elastic potential energy. And the load is released and it moves upwards and downwards. The distance traveled in each movement decreases until the load stops moving. Explain why the load stops moving. वो energy उसकी loss हो रही है. Due to air resistance, spring की stored elastic potential energy loss हो रही होगी in the form of heat. Air resistance उस ब्लॉक से टकरा के उसकी एनर्जी को जाया कर रही है। तो मैं यही बोलूंगा elastic potential energy is lost as heat due to air resistance. Air resistance की वजह से you lose all of the elastic potential energy as heat. ठीक है भाई, this general physics section comes to an end alhamdulillah. From Thursday onwards हम start करेंगे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेक्शन। इसका पीडीएफ आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, और जो ऑन साइट स्टूडेंट्स हैं हमारे वो उसको यहाँ से बुक को परचेज कर सकते। तब तक के लिए ख्याल रखना भाई सब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।